Tejasvi Yadav, though, has responded to the video, calling it unimportant, says that the focus should instead be on important issues like jobs. The Modi government continues to deflect from these issues, he says. Listen in. लगातार जो है आपके वीडियो की बात हो रही है, आप भी अपने भाषणों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, कैसे देखते थे? मुद्दे की बात होनी चाहिए। गरीबी, रोजगार, नौकरी कितना दिया प्रधानमंत्री जी ने? गरीबी क्यों नहीं मिटाया? पलायन क्यों नहीं रोका? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्षेत्रीय मुद्दे हावी। Let me go across to Saket joining us with more details. Saket, ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि प्रधानमंत्री ना कि तेजस्वी यादव की ये मछली खाते हुए जो वीडियो है उसका जिक्र करे हैं आज। उन्होंने पिछले साल जो लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के मटन कुकिंग वीडियो जो वायरल हुई थी उसका भी जिक्र किया। तब भी भाजपा ने ये सवाल उठाया था कि ये वीडियो सितंबर के महीने में बाहर निकली पर अगस्त में ये मीटिंग हुई थी। तो बीजेपी ये कहना चाह रही है फिर से प्रधानमंत्री के द्वारा कि हिंदुओं के आस्था की कोई कदर नहीं है ऑपोजिशन में। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने इस मुद्दे को अब अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश कर दी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद तेजस्वी यादव के इस वीडियो को लेकर और जो सावन के दौरान लालू यादव ने मटन बनाने की रेसिपी राहुल गांधी को बताई थी दिल्ली में अपने आवास पर, तो वही जो बात है उसको प्रधानमंत्री ने अपने सभा से कहा है। और इस पर अब सियासत और तेज होगी आने वाले समय में, क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि जो मछली खाया गया तेजस्वी यादव के द्वारा वो नवरात्र के एक दिन पहले की ये घटना है जब हेलीकॉप्टर में वो लंच कर रहे थे। तो इस बात पर बीजेपी बिना मतलब का हाय तौबा कर रही है और चूंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इन चीजों को बीजेपी मुद्दा बना रही है, इसलिए इन चीजों की बात कर रही है और असली मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। लेट मी टेक इन अ वर्ड फ्रॉम निखिल आनंद एज वेल। साकेत बने रहिए हमारे साथ। Nikhil Anand of the BJP with us on the phone line. But before that, I have Ajay Alok with us as well on the phone line. Mr. Ajay Alok, what do you make of this? Tejasvi Yadav first comes out to say when the BJP spoke of this particular video very recently that this was on the 8th and not the 9th. So this was on the eve of Navaratri. And now he comes out to say these are unimportant issues. The BJP is deflecting from real issues like jobs that actually need to be spoken of in rallies the Prime Minister is carrying out. Tejasvi Yadav should know that he shouldn't teach. You don't teach your father how to do jobs. Number one, and number two, you should learn how to respect the values, and you should learn how to respect faith. And you don't have any rights to just make a mockery of somebody's religious faith. That you are eating fish during Navratra and you are posing a video and saying that okay, now you get irked. And he's saying absolute lie that he did it on 8th because the Twitter has a timeline, and Twitter has a timeline stamp which is clearly mentions that at 1:36 p.m. on 9th, he posted the video and he made the video. So Tejasvi Yadav is just out of his mind because actually it's a lack of intellect and lack of grey matters because the studies do matter. And this clearly reflects how poorly he has been brought up. Besides, Dr. Ajay Alok, didn't the Prime Minister very clearly also lay emphasis on how the law doesn't bar anyone from eating or not eating vegetarian or non-vegetarian, and he's nobody to dictate that either. But keeping in mind people's sentiments and their faith, people can most certainly, especially politicians who are followed by crores of people in the country, can refrain from posting these videos. See, no one can force anyone to adopt certain things and what to eat, what not to eat, when not to eat. But being in public life comes with a responsibility. And if you're not responsible enough, you're not fit to be in public life. And Lalu family altogether, right from A to Z, nobody is fit to be in the public life because they are absolute a bunch of corrupt people. Right from 2 generations, we have seen corruption, flowing from Lalu Yadav up to Tejasvi Yadav and going up to nowhere, I don't know. Everybody is on bail. This is the problem. They don't understand the values. Is this from where, Dr. Alok, BJP's Janyadhari Brahmin jibe comes in for several in the Congress party, including Rahul Gandhi? When did Rahul Gandhi become Janyadhari Brahman? He's not even a Hindu. Forget about becoming a Brahman. Okay. Thank you, Dr. Alok, for speaking to us here on Times Now. Those are the visuals, the videos that we're talking about, which were raised by the Prime Minister as well during his rally in Udhampur. Several BJP leaders reacting to the same. Tejasvi, of course, has come out to defend his comments and his actions as well, saying that this was not
done during Navratri. In the meanwhile, we have another reaction coming in from Misa Bharti. She's also defended Tejashwi Yadav. Remember, she too has been in the headlines for all the wrong reasons for the remarks she made against the Prime Minister. She comes out to say that he's already issued a clarification over the same, that he said that fish wasn't eaten during Navratri. Listen in. जी को नवरात्र में मछली खाने का भी विवाद हो गया। मछली वो खा रहे थे हेलीकॉप्टर में नवरात्र के समय। देखिए, तेजस्वी ने खुद इस पे अपना क्लेरिफिकेशन दिया कि उसने नवरात्र में मछली नहीं खाया था। तेजस्वी जी तो सबसे ज्यादा नौकरी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ क्यों चुप हैं आप? मछली आपको दिख रही है, जाहिर तौर पे ये डाइग्रेशन टेक्निक नहीं चलेगी। कम से कम आपसे अपेक्षा नहीं थी प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं।